Hello and welcome to Motor Talks from Motor Gadi, a leading publication in auto and vehicle industry. I am Vatsal Agarwal this side, and today with us on a conversation we have Mr. Sumit Aneja, founder of Speedway Electric. Welcome to you, sir, on our platform. I am Sumit Aneja. I represent a company called Speedways Electric, based out of Jalandhar, Punjab. And we are one of the largest companies in the EV segment when it comes to the range. I would not say largest in the country, but one of the largest in the world at this time. So we currently make, literally everything in-house when it comes to, the entire body. If we talk about the chassis, if we talk about the batteries, if you talk about the tires, so literally everything, and we have specialized it so much that we can literally make any product for any industry at this time. So being everything, being also being a bootstrap, we had no choice but to develop everything for the market, because we had to see what the market actually requires, and then we started building it up. Like our tagline also says, if you can think about it, we can just make it, Yes, right? I saw that. So that's about the company. So my first question to you, sir, is that when did you start this brand? Okay, so this is like an interesting story as well. In 2010, we are a company, that also is into other products. But in 2010, I was looking at the R&D for my company and thought, why not design an electric car? There's no high-speed superpower electric car of India at this time. So I designed a high-speed car, which was a mixture of, a Lamborghini and, and the Super Ferrari. And the car actually came out really nice. And we made it at the first go. So it was just a trial, just out of fun. Let's just make an electric car. So gadi to ban gaya now. What to do, So now we weren't sure if the India is ready, or if we are such a large company that we can start producing cars. So thought, but this is a good concept. Why not come up with something which is required in the market, which is not available in the market, right? So when we went to study, we thought the best idea would be to start in the campuses at this time, because the regulations and the norms are coming, and government was really working on it as well. So we thought the best bet, the lowest hanging fruit would be to start selling for the campus. So we started with making golf carts, then went into the industrial vehicles. Then, as the market developed, we further started to make different products for the road as well. And eventually, we have from the largest range in the country, but we wanted to have the trials within the campuses, because even though the rules are being made, the regulations are being made, government is working very, very hard on it, right? And it's just not in India, it's everywhere, right? And I think we have over 40 models that we have already created and which are already running within the industries, within the campuses, within some countries also, apart from India. So So, yeah. like your main USP is in the golf cart, those buggies which are used in the factories. नहीं ऐसा नहीं है. Golf carts is just a name, if you say aspar, Okay, right? Because it is easier people related to golf carts, because सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में गोल्फ कार्ट है, तो किसी okay, को गोल्फ कार्ट बोलते थे ना, वो समझ में आता था. अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलेंगे तो वो समझ में नहीं आता था. इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दे okay. मेंट बाय द बिग बसेस, बिग कार्स, तो ऐसा नहीं है. Hmm. So golf carts is only the smallest segment of electric vehicles we deal with. We have regular vehicles like Tata Ace also. We have small buses also we make, right? We also have like the three-wheelers. We have, small tuggers. We have small loaders. But वो इतने सारे models हैं. But since we only use it in the campuses, सब road के ही models हैं. What you use for the road, but instead of being used on the road at this time, we are only using it in the campuses, because we also want to make sure that when we launch, when we come on the road, that's the D-Day, and that's when people really judge you, कि आपने बनाया क्या है. Yes, So campus is the best way for us to know and to experiment, and to check कि कहाँ मिस्टेक, क्या मार्केट में क्या नवा ट्रेंड आ रहा है. सो इट जस्ट नॉट हेल्प अस एक्सपेरिमेंट आवर प्रोडक्ट्स, एंड एट द सेम टाइम यूजर को भी समझ में आते हैं क्या चीज चाहिए, एंड देन वी आल्सो अंडरस्टैंड कि और क्या क्या हम इसमें बेटर कर सकते हैं. एंड द टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली गेटिंग न्यू एवरी डे. It's not even like every month. Rose you every study, rose second. you see. Because it's so aggressive at this time, so you want to make sure कि जब गवर्नमेंट रेडी है आपके व्हीकल्स टेस्टिंग के लिए लेने के लिए, and when the market is ready for that product, we should have one of the best product, right? Yes, In the terms of your your looks of the vehicle, in the terms of the performance, in the terms of the price, in the terms of the serviceability, सब segments में हम लोग
काफी अच्छे होने चाहिए, ताकि यूजर को, बीइंग अ स्मॉल कंपनी, यूजर को वो कभी भी इशू नहीं आए, और ही कैन से कि नहीं यार, आई हैव नॉट मेड अ मिस्टेक, बाइंग अ स्पीडवेज इज ओनली बीन गुड फॉर मी। सो दैट्स द स्टेज वी आर एट द मोमेंट। सो अभी आपने प्राइस एंड परफॉर्मेंस की बात करी, तो आपका सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट एंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट, लाइक द टॉप एंड रेंज, एंड द परफॉर्मेंस, लाइक द सबसे स्लोएस्ट एंड द सबसे फास्टेस्ट, लाइक परफॉर्मेंस कैसे कहेंगे इसमें? सो अब ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अगर हम लोग जाते हैं लास्ट माइल के अंदर, लास्ट माइल के अंदर हम लोग को दो जगह में कैटेगराइज इसको किया है। सो वी आर अ कंपनी हु वांट्स टू स्पेशलाइज, हमारा विजन भी है, दैट इज रियली नॉट ऑन द हाई स्पीड कार राइट नाउ, ओके, इट इज ऑन द लास्ट माइल सॉल्यूशंस। सो इसके ओके। अंदर हमारे दो सेगमेंट्स आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारा ऑन रोड पैसेंजर, एंड एक आ जाता है हमारा ऑन रोड कमर्शियल। ऑन रोड पैसेंजर के अंदर हमारे पास में थ्री व्हीलर्स तो है ही है, बट जो थ्री व्हीलर्स का जो डिजाइन है, इट इज वेरी इंटरनेशनल, कि आप उसको किसी भी कंट्री के हिसाब से वो मैच करता है। सो इट्स बीन डन इन सच अ वे कि किस भी कंट्री में लेके जाएंगे वो नॉर्म मैच करेगा उसका। सो ओके। दैट इज फ्रॉम द थ्री व्हीलर, फ्रॉम द स्मॉलर ई कार to your normal bigger three wheeler. Apart from that, we have two segments in the electric cars also. एक आपका L6 कैटेगरी है, जो आपका यूरोप में, यूएस में यूज होता है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अलाउड L7, तो एक वो कैटेगरी है। तो दिस इज ओनली, दिस कैटेगरीज आर स्पेसिफिकली फॉर द सिटी यूज। ओके। बहुत ज्यादा हाईवे पे हाई स्पीड के लिए जाने पे, उस L7 का, जैसे आपको जानते हो नॉर्म, उसका आई थिंक 70 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड का है। यस। तो अगर हम लोग लास्ट माइल में करते हैं, तो कॉस्ट कोस अब ऑलमोस्ट द हाफ द प्राइस, जब आपको बहुत दूर लेके जाना ही नहीं है, स्पेशली फॉर द टैक्सी एप्लीकेशंस, एंड देन द buyer will make a lot of money because he's charging same price for the kilometer, but his cost price is lesser. Apart from that, in the passenger, we also have a bus segment. We have made up to the mini bus and the micro bus. So this is also one of the cheapest buses, electric buses in the world. Which can also go in the small streets also, क्योंकि बड़ी buses में issue होता है कि आप जा नहीं सकते, हाँ। right? सो वी हैव ओनली फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स जो हमको लगता है कि मार्केट में अभी मिस है, अभी जो जिसका अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है और डिमांड बहुत ज्यादा है। द गैप, यू हैव फिल्ड दैट गैप हाँ हाँ, बेसिकली। सो वी हैव फिल्ड दैट गैप, राइट? ओके। तो ओके। yeah, so that's been for the passenger segment. For the commercial segment, again, we have different segments in the commercial segment. When we talk about, इसके अंदर हमारे पास में थ्री व्हीलर्स तो हो ही गए, छोटे और बड़े। उसके अलावा फोर व्हीलर्स के अंदर भी हम लोग के पास में 3 से 4 मॉडल्स हैं, जो मटेरियल कैरी करने के लिए, विच कैन कैरी फ्रॉम 800 kg to nearly 2 tons. So that also we are doing it. रोड पे हम लोग कभी भी अपना स्वीट टाइम ले रहे हैं लॉन्च करने के लिए, कि जब हम लोग रेडी हैं हम लॉन्च कर देंगे, बट हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इसको डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। एंड इधर जो बड़े बहुत लार्ज कैंपसेस हैं, जो एक शहर की तरह कैंपसेस ही हैं, तो उनके अंदर भी हम लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं, एंड कंटिन्यूसली कर रहे हैं। So how does you see your competition basically? Because this is electric vehicle category is emerging every day. Every day a new brand is emerging. So how do you see that competition? So competition is yes and no both, because number one, we work on the core issue, we are trying to solve the problem कि कस्टमर का इशू क्या है। तो जब आप कस्टमर के स्पेसिफिक इशू में आते हो ना, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन उसमें आपको मिलता नहीं है, because Okay. you are, because you are not, the other person might not be addressing the issue that you are trying to address in that case है। एंड ऑल्सो अभी बहुत सारी कंपनीज आ रही है, नए प्रोडक्ट आए, लॉन्च तो अभी कोई भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट द कंपटीशन लाइज फॉर अस, बट इतना ज्यादा कंपटीशन है भी नहीं भी, इट रियली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट दैट यू लुकिंग एट व्हेन इट इज कमिंग टू द कमर्शियल सेगमेंट। सो इफ यू लुक एट फोर व्हीलर्स में, देयर आर नॉट टू मेनी एट दिस टाइम, एंड थ्री व्हीलर्स में देयर इज अ क्वाइट अ बिट ऑफ अ कंपटीशन। सो इट again looks at the segment that you are looking. If you are looking at the passenger segment, if you are looking at the last mile, I think three wheeler के भी अलावा भी कोई भी नहीं है, that's the only one. Yes. So there is still a lot of gap, and there is still a very huge potential in the market that's gonna be happening in the next 5 years. So it's gonna be मजा आएगा सर काम Okay. करके, it's gonna be it's a fun industry to be in. रोज there are new challenges, रोज कुछ नया आता Yes. है, Yes. so it's a lot of fun. You will never get bored. हर दिन एक नई सब्सिडी आ जाती है, हर दिन एक नई गवर्नमेंट का
वो आ जाता, प्लान आ जाता है, आज ये नहीं आज वो है। पर सर ये तो अकेला यस। ऐसा इंडिया में नहीं है, दिस इज ऑनेस्टली वर्ल्ड ओवर। इट्स बिकॉज ना ओके। जो ईवी है ना, ईवी इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। आप जो आईसी इंजन है उसको आप जैसे मर्जी यूज करो, जब आप हम्म। इलेक्ट्रिक इंजन के आते हो ना, बिकॉज कॉस्ट वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाती है पावर्स के अंदर करने में या दूसरे में। तो जो रिक्वायरमेंट है आपकी, यू हैव टू बिल्ड द व्हीकल, ईवी हैज टू बी लुक्ड एन ईवी, यू कैन नॉट कंपेयर ईवी विद एन आईसी इंजन। आइस। आइस। जब जब आपको एक छोटी जगह में यूज करना है, जब आपको so okay, I'll give you an example, can I, and I usually use this example. I would say at this time, okay, EV is your second vehicle, it's not your first vehicle, right? कारण क्या है यस। कि काफी जगह अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, हर जगह तो चार्जिंग चार्जिंग स्टेशन नहीं है अभी, नहीं है। राइट? दूसरी जगह क्या हमारे पास में पीछे इतना ज्यादा पावर है कि हम लोग फीड कर सकें, है ना? हम्म। हमारा पॉलिटिकल डिसीजन तो है कि हमको ईवीज करना है, पर पीछे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनते बनते भी तो टाइम लगेगा, इट इज नॉट ओवर द नाइट गेम, ऑब्वियसली। राइट? तो ऑब्वियसली। इफ वी आर बिल्डिंग सॉल्यूशंस, अब हमको पता है कि यार घर में आस्केट में हर एक आदमी के पास में एक गाड़ी से ज्यादा नॉर्मली होती है, काफी जो ईवी का बायर है उसके पास में एक से ज्यादा गाड़ी होगी नॉर्मली, राइट? यस। और कितने लोग हैं उसमें से जो एक दिन में 30 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करते? आप ऑफिस जाओगे, घर आओगे, कुछ घर मार्केट्स आओगे। के लिए लेंगे, है ना? लॉट ऑफ पीपल हु आई ऑल्सो आस्क इन द मार्केट कि आपने ये ईवी लेने का पर्पस क्या है? जैसे किसी आसपास में कहीं जाना होता है, हम लोग ईवी यूज करते हैं, एक शौक भी है ईवी का, नवा नवा है, राइट? So यस then यस we यस। want to make the products, so we want to make the products which are not so expensive because we know कि हमारा रीजन क्या है बेचने का। Now हम्म। we are catering to a missing segment जिसको आसपास में जाना है, छोटा गाड़ी चाहिए, सस्ता गाड़ी चाहिए, that he can afford to buy। कल को अगर वो कंपेयर करे पेट्रोल से, ज्यादा उसके पॉकेट में ना हो, या अच्छा चाहिए तो सही पर महंगा बहुत है अभी। So we don't want to, so we want to eliminate that session. It should just not be for a rich people game. It has to come to a common man. So if that answers the So, question. so you, as you told, like you have started journey in 2010 approximately. So you Yeah. must have faced many challenges and many turnovers in like COVID pandemic and many other situations. Like, what was the biggest challenge while taking this journey you faced? The biggest challenge that completely changed your destiny for this. So I think COVID sort of did help in a way people, get the awareness. So even though those are bad times for the businesses, सब कुछ बंद था, and you have to sustain, कैसे करोगे? Because you have to take care of employees, you have family, आपके पास responsibility है, families to feed as well, right? Yes. And अब आपका काम नहीं चल रहा तो it's going to be a difficult time. So I think that was the most challenging time for us. Also in the terms of, कि आप can, because see this industry is very very new, so you have to keep traveling to see कि यार दुनिया में चल क्या रहा है, कि कहाँ Hmm. पर क्या चीज चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। घर बैठे तो कुछ पता लगेगा नहीं, अब एक दूसरे से सीखते हो। सो Obviously. वो भी ट्रैवल एक बंद हो गया, तो उसकी वजह से ना आई थिंक कि अगर वो ना होता, अभी तक काफी हद तक हमारी लॉन्चिंग हो चुकी होती, काफी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं। जो वो पीरियड है उसने 2 से 3 साल ना इंडस्ट्री को थोड़ा सा पीछे पुश इट बैक। Setback. Setback कर हाँ, दिया है. हाँ, हाँ, सेटबैक कर दिया है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक दैट इज वन बिगेस्ट चैलेंज that we had today, and we are still overcoming that challenge for the products, I think उसमें कभी भी कोई चैलेंज नहीं आया, बिकॉज हमारा शुरू से टैगलाइन था, इफ यू कैन ड्रीम इट वी कैन मेक इट। तो जब भी हमको कोई चैलेंज नजर आया किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वी स्टार्टेड मेकिंग द प्रोडक्ट, एंड हमको उसका टेस्टिंग का कोई इशू नहीं आया, बिकॉज वी वर टेस्टिंग इन द कैंपसेस एंड वी हैव Campuses. लॉट्स ऑफ लार्ज क्लाइंट्स, a huge number. So उसके अंदर we never faced any challenge as such. थोड़ा सा challenge अभी है रेगुलेशंस की वजह से, बट दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीबडी इज फिगरिंग आउट कि क्या टेस्टिंग्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बिकॉज द व्हीकल इवेंचुअली हैज टू कम ऑन द रोड, एंड गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी 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 careful at this time, and not just in India, everywhere. So it's the same story across the world. We have been exporting it also. We have been testing it, and we have tested in 5 countries apart from India, but everywhere Okay. it's a similar challenge. Can you name those five countries like where you have tested that product? We have already tested in the US. We have Okay. already tested in UK. We have already tested in Maldives. We have already tested in Middle East. We've already tested in Nepal. So were the results like the same as you got in the India, or there was some different difference? No, 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 no. Results were actually That quite that's different. They were like very, very different, especially when it comes to the suspension. जहाँ okay. पर
मुझे एक लाइट वेट प्रोडक्ट इंटरनेशनल के लिए थोड़ा सा करना है, इंडिया के लिए आई कैन नॉट डू इट। आई थिंक कि बिकॉज हम लोगों की रोड बहुत वेरी करती है ना। देयर आर हाँ। सर्टेन कंट्रीज जहाँ पर तो यूएस में तो रोड बम भी नहीं आता। ओके। There is zero road bumps out there, right? So कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता। There's no concept of the concept of a speed breaker doesn't exist, right? ओके। Secondly, also, one of the interesting thing is the driving skill. Driving skill is like very, very smooth. We Indians are like very, very aggressive. We want to do everything the fastest, right? Yes, तो यहाँ पर ब्रेक भी बहुत जोर से मारते हैं, एकदम से तेज yes. जाएंगे, एकदम से ब्रेक मारेंगे, सो हर जगह में ना, आई थिंक अगर आपने इंडिया के लिए अच्छा गाड़ी बना लिया ना, तो वर्ल्ड में कहीं भी यू आर द बेस्ट। सो आई थिंक दैट्स Okay, व्हाई इंडियन प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट एट दिस टाइम। वी हैव सो मेनी okay. challenges and we end up making really good products. We couldn't afford to make a bad product. Like this was a different move, like you can say, for the global Yeah. products. Oh, yeah. But then again, when you are selling something which is in next to the sea, it has to be a different, slightly different composition compared to the other one. So you learn a lot of things, in the journey. सर्दी में जाएंगे, Yes. अब सर्दी वहां पर there's one location we said where temperature was like -5, and then it was a Okay. different challenge up there, right? And there are places where it's like a lot of high temperature. India has a lot of high temperatures, so you have to I give the agree. circulations cooling accordingly. So it's like different. तो हर जगह के हिसाब से I think there is a big change, and then how to put it all together कि हर जगह काम आ जाए. So that's also one of the Huh. challenges. So what type of technology and innovation you're using in your products at present? I want to know about that because I am a BTech graduate, so I Okay. understand that type of technology. So that's Okay, why. couple of the things I will not be able to tell you because some of them are still under the patent, right? Okay, But okay, no issues. yeah, but there are few technologies that कि like I said कि आपको ना हर चीज हर जगह यूज नहीं कर सकते, right? Okay. जब आपको लास्ट माइल यूज करना है तो देन यू डोंट वांट टू फॉर एग्जांपल, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग आप देखते हैं ना कि वो एक छोटी सी गाड़ी है, उसके बड़े बड़े टायर लगा दिए, it Hmm. is of course affect the performance. It will of course take the price also high, right? So you have to like make everything perfect for that, आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका यूज, आपका पर्पस क्या है, एंड इफ यू आर मेकिंग व्हीकल फॉर दैट, इफ यू आर यूजिंग द राइट मोटर्स फॉर दिस, कि अगर ये नहीं है कि अगर मेरे को यहाँ पर जाना है जब मुझे नीड ही नहीं है 60 किलोमीटर से ऊपर जाने की, एंड व्हाई वुड आई मेक इट 120 किलोमीटर एंड डबल द कॉस्ट ऑफ इट, राइट? सो उसी हिसाब से आई वुड यूज द माई इलेक्ट्रॉनिक्स इनसाइड टू कीप द कॉस्ट डाउन, to keep the to keep the to use the kind of the steel that I need, and not make it extra expensive and make it more for the market. I think that's been our USP as well at this time. Components specific, I would want to name them कि क्या क्या चीजें हैं, Okay, yes, you can. You can name but you them. get the but you get the hint, right? Yes, yes, I got that in. Yeah, So that's all for the today, sir. Thank you yeah, so yeah. much for joining us, and Mhm. we'll connect for sure in the future, and we'll see Definitely, Speedway yes. Electric in electric bikes as well, because that's the category you have not spoken about today, No, we electric have bikes. not spoken about. No, that's not the category Because of. because It's a I mass. think like that's the mass market playing, and you might achieve good numbers in that category as well. So Yes, thank you so much, sir, for your yes. time today, and I'll take your leave. Thank you so much. Thank you, Thank you sir. so. Thank you so much. Bye bye.